Good morning, students. Today we are going to start with the revision of our chapter number 2, that is the end of bipolarity. In this particular chapter, have to study these following topics: the origin, establishment, the features, what was one party system, state controlled, then the reasons. Main topic of this chapter was the reasons of disintegration of USSR, bureaucratic lack of freedom of speech, reforms that were introduced by Gorbachev, economic stagnation, military powers, and rise of nationalism. Then the consequences of uh, the bipolarity, the end of Cold War, establishment of US as a superpower, new states that were emerged in Soviet Union, ठीक है ना, and the decline of economy, then shock therapy, succession of Russia, ठीक है ना, and the last topic, India's relationship between India and US, Russia, cardinal relation, shared vision of world, mutual cooperation of trade, and in the last, the new reference material that was given in your CBSE, that was Arab Spring, that I discussed with you. ठीक है ना? So first of all, what was basically Soviet system? It came into being after the Bolshevik Revolution of 1917. ठीक है ना, बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद 1917 में सोवियत सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ. इसमें इट इंट्रोड्यूस विद द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड एग्लिटेरियन सोसाइटी. वन ऑफ द सुपर पावर्स ऑफ द कोल्ड वॉर एरा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट वाज यूएसएसआर. ठीक है ना, इट वाज विद ए डेवलप्ड इकोनॉमी सप्लीमेंटेड बाय वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज, complex communication network, well developed transportation, etc. Means Russia is also a well developed, Soviet Union was a well developed nation. ठीक है ना. However, over a period of time, highly bureaucratic and authoritarian होता चला गया ड्यू टू द लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है ना, इट वॉज लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द कॉमन पीपल. भाई कॉमन पीपल की एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं हो पाई. आपको पता है रशिया एक ऐसी कंट्री थी, यूएसएसआर, सॉरी मैं बार बार रशिया बोल रही हूँ, दैट वाज, जहाँ पे जो वर्कर क्लास थी वो नोबेलिटी को रिस्पेक्ट नहीं देती थी. हमने रशियन रेवोल्यूशन में 10th क्लास में ये पढ़ा, 9th क्लास में पढ़ा है, दैट द वर्कर्स और द पीजेंट्स ऑफ यूएसएसआर, दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेलिटी. ठीक है ना, दे आर, why they don't have the no respect, they don't have respect because they are the nobility was very authoritative there. ठीक है ना, ठीक है ना. Then the next topic in this chapter was Gorbachev and the disintegration of USSR. Mikhail Gorbachev, the General Secretary of Communist Party of USSR, he has took initiative of the policies, openness, restructuring to democratize the system and introduce political and economic reforms in 1985. It was opposed by many of the leaders within the Communist Party and the common people. Disappointed with the system, in December 1991, Russia, Ukraine and Belarus declared disbandment of USSR. सबसे पहले किसने डिक्लेयर किया था? यूक्रेन और बेलारूस ने रशिया से अलग डिक्लेरेशन कर दिया था. Commonwealth of Independent States, CIS, what was the full form of CIS? 1 mark question may be asked. Was formed and Russia took over as the successor of Soviet Union. अब जो सोवियत यूनियन की जो भी पॉलिसीज थी, जो भी सिस्टम था, वो सारा किस पे चला गया? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन दैट मूव्स टू रशिया. ठीक है ना. व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट? सीधा क्वेश्चन है. इकोनॉमिक रीज़न थे, इकोनॉमिकली स्टैग्नेट हो गई थी कंट्री. ठीक है ना, इकोनॉमिकली बढ़ नहीं पा रही थी आगे, कंज्यूमर शॉर्टेजेस हो गई थी, ओवर स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग मिलिट्री रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा स्पेंड हो रहा था, चीपर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू द वेस्ट के कंपेयर में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चीप होती जा रही थी. पॉलिटिकल रीज़न, अनअकाउंटेबल कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट accountable to the people, lack of freedom of speech and expression to the people, then corruption is going increasing, stiffing administration, centralized authority, more privileges to the bureaucracy and expense of ordinary masses, Gorbachev reforms that were not applicable here. ठीक है. Then social reason, rise of nationalism, desire of sovereignty, everyone wants to be sovereign in the country.
ठीक है ना, especially the prosperous areas of USSR like Russia, which felt that they are paying too much for the survival of the backward areas. ठीक है ना, awareness among the common people, धीरे धीरे beginning of the 20th century the common people they are being aware about the, they know about the drawback, what are the drawback of the system and what are the weakness of the system against the west. तो क्या सिस्टम में क्या वीकनेसेस हैं, कॉमन पीपल जब अवेयर हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, तो सिस्टम बहुत सारे रिफॉर्म्स लेके आता है, ठीक है ना. तो दिस इज नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, वट ओवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ disintegration. Disintegration of USSR led to the end of the Cold War confrontation and the resultant arms race between USSR and USA. दोनों के बीच जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो जो क्या हो गया, आर्म रेस कहीं ना कहीं दोनों के बीच खत्म हुई. It changed the power dynamic on global politics में change होगी. And after the disintegration of USSR, USA became the superpower. ठीक है ना, the capitalist system became the dominant economic system. Liberal democracy became the best way to organize political life. This may be as a one mark question in a tricky way. ठीक है ना. It also led to the emergence of new states होगी. ठीक है ना. New states what was shock therapy? It refers to the transition of communist state from a socialist system to a capitalist system influenced by the World Bank and the International Monetary Fund. ठीक है ना. शॉक थेरेपी की तो वो जो एक ट्रांजिशन आया था कम्युनिस्ट स्टेट में सोशलिस्ट सिस्टम से कैपिटलिस्ट सिस्टम में, दैट वाज नोन एज द शॉक थेरेपी. ठीक है ना. इट्स इंटेंसिटी एंड पेस वेरिड अमंग द फॉर्मर कम्युनिस्ट स्टेट. इसकी जो इंटेंसिटी थी और इसकी जो वेरिडनेस थी वो पहले वाली कम्युनिस्ट स्टेट से कहीं ज़्यादा अलग थी. इट करेक्टरिस्टिक्स जो थी इन्फ्लुएंस टोटल एलिमिनेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द सोवियत period, privatization of agriculture and property, switch of free trade, foreign direct investment इसमें आ गया था, deregulation, currency convertibility and disintegration of the alliance system. These are the main points of the shock therapy. Consequences of shock therapy: it destroyed the economy of USSR. ठीक है ना. स्टेट ऑन इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द सोवियत पीरियड कोलैप्स्ड हो गया था. वैल्यू ऑफ रूबल द करेंसी ऑफ रशिया दैट वाज टोटली डिक्लाइन. ठीक है ना. सॉरी यूएसए नहीं थी, रशिया, सॉरी, रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया बेटा. द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द रीजन बिकेम वेरी हाई. ठीक है ना. मिडिल क्लास वर पुश्ड टू पेरिफेरी ऑफ द सोसाइटी. एकेडमिक मैन पावर डिसइंटीग्रेटेड. ठीक है ना. माफिया emerged in the region. Post-Soviet states that were divided into rich and poor regions, weak political system that was with much of the power to the president established in most of the states. ठीक है ना. What were the tensions and conflicts between these two states? So the most of the former Soviet रिपब्लिक्स वाज prone to conflict, सिविल वार्स होगी, इंसर्जेंसीज होगी. ठीक है ना. चेचन्या एंड डेगिस्तान दे हैड अ वायलेंट सक्सेस्टेंट मूवमेंट इन सेंट्रल एशिया. सिविल वार टुक प्लेस इन अजरबैजान एंड जॉर्जिया. अजरबैजान का तो अभी भी हो रहा था भैया. ठीक है ना. अभी भी आप रिसेंटली भी आप देख रहे थे. चेकोस्लाविया, स्लोवाकिया स्प्लिट इनटू चेक एंड स्लोवाकिया. ठीक है ना. सेंट्रल एशिया वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज कंपटीशन जोन बन गया आउटसाइड पावर्स के लिए और ऑयल कंपनीज के लिए. पोस्ट 9/11 यूएसए इज नीन एस्टेब्लिश मिलिट्री बेसिस इन द रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया. अब जो नवंबर 11 की जो इंसिडेंट हुआ था यूएसए में, उसके बाद मतलब जहाँ जो बम्बार्डमेंट हुई थी तो उसके बाद सेंट्रल एशिया में अपने मिलिट्री बेसिस बनाने शुरू कर दिए यूएसए ने. रशिया वांट्स टू बी इन अंडर रशियन इन्फ्लुएंस में. रशिया अभी भी रशियन इन्फ्लुएंस में रहना चाहता था. चाइना ने बिगेन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड टू गेन असेस इट्स ऑयल रिसोर्सेज पे गेन करने के लिए चाइना ने भी वो किया. नाउ व्हाट वाज इंडियाज रिलेशन विद पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज. इंडिया ने अपने रिलेशन मेंटेन करके रखे रशिया के साथ. रशिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट neighbor, you can say helper of इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस. इंडो रशिया रिलेशन जो थे वो बिन ट्रस्ट म्यूचुअल कॉपरेशन था ट्रेड कॉमर्स और पॉलिटिकल इश्यूज में. बोथ द कंट्री हैज़ ए विजन ऑफ मल्टीपोलर करेक्टराइज एग्जिस्टेंस. इंडियन मूवीज दैट वर
very that was shown in the Russia में दिखाई जाती थी independent foreign policy, strengthen the international organizations such as UN and all that. After that, I have these one more questions to you. ठीक है ना. Socialist came into existence after the social revolution of 1917. Communist Party democratically. These are. Now there is another and more important topic that was added in this chapter was the Arab Spring. What was Arab Spring? Basically, 21st century witnessed emergence of the developments in democracies and democratization in West Asian countries. इन्हीं में से एक इवेंट था that was considered as Arab Spring that was began in 2009, located in Tunisia. Tunisia is a country on the east coast of northern Africa, just to मेडिटेरियन की सी के साथ लगती हुई टूनिशिया एक कंट्री है. अरब स्प्रिंग जो था बेसिकली बेटा इसकी रूट्स जो थी वो स्ट्रगल ऑफ करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी जो अरब कंट्रीज में स्टार्ट थी, ठीक है ना, टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल मोमेंट में बदल गई थी बिकॉज द पीपल कंसिडर एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स जो थी एज आउटकम ऑफ एटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप. जो अरब कंट्रीज में डेमोक्रेसी स्थापित होने से पहले जो कंट्रोवर्सीज थी वहाँ पे जो सीरीज ऑफ जो लोगों ने अब जो मूवमेंट चलाने शुरू किए थे तो वो उसी को अरब स्प्रिंग का नाम दिया और ये स्टार्ट हुआ था टूनिशिया से. डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी दैट स्टार्टेड इन टूनिशिया स्प्रेड थ्रू आउट द मुस्लिम डोमिनेटेड अरब कंट्रीज इन वेस्ट एशिया. वहाँ से शुरू होके ये वेस्ट एशिया की जो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज थी डेमोक्रेसी की जो डिमांड थी वो फिर उनमें शुरू होती चली गई. होस्नी मुबारक हु हैड बीन द इन पावर इन इजिप्ट सिंस 1979 से वो वहाँ पे पावर थे, आल्सो कोलैप्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट की वजह से उनकी सरकार भी इजिप्ट में गिर गई थी. इन एडिशन to the influence of the Arab Spring could also be seen in Yemen, Bahrain, Libya and Syria where similar protests लोगों ने किए led to the democratic awakening throughout the region. The Arab Spring is basically related to what that was considered as a protest against the dictatorship rule in the Arabian countries for getting democracy. So this is all for today's video. And if you are having any doubt, you can ask me. Have a good day, students.